Hello student, this is Vineeta Singh from ST.XAVIERS School, Nalia. Good morning to all. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. Today we are going to discuss class 9, chapter number 5, the snake and the mirror. Okay? So before going to the topic, we just introduce with the chapter. Okay? So this is the story. The story is a narrative within a narrative. Okay? Understood? It means what? The writer tells the story which was told to him by a homeopathic doctor. As we see from the title, the snake and the mirror are the two most important thing in this story. So this homeopathic doctor encountered a snake and the snake fell on the doctor. And when the snake saw its reflection in the mirror, it was more interesting in that, and the doctor life was saved. Okay, so without any delay, let's start it. It's very funny and very interesting story. So please understand it. Okay, has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from a homeopath. Okay. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as a doctor continued with his. So here the homeopathic doctor is narrating the story. He asked the writer and the group if anyone had even wrapped by a cobra snake. Okay, the audience became silent due to the fear of the cobra snake. So then the doctor narrated his story. And what was his story? It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. Okay, so उसे नरेट करना स्टार्ट कर दिया अपनी स्टोरी. एक हॉट समर नाइट था, ऑलमोस्ट 10 o'clock, और मैं रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस आ रहा था. एंड द डॉक्टर वाज ओपनिंग द डोर एंड एट दैट टाइम ही हर्ड अ नॉइज बिकॉज फ्रॉम द अबाउ. ओके, रूम से उसको एक नॉइज सुनाई देता है, बट उसने उतना रिएक्ट नहीं किया. रिएक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज ही वाज वेरी यूज्ड टू अबाउट दिस such a noise. Okay, the sound was a familiar one could say that the rats and I shared the room. He just thought that it was none other thing, it was just a rat, and he is very used to about this noise because rats and he also shared the room. Okay, then I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. वो एक small rented room में रह रहा था. वहाँ पे electrified नहीं था. Electrified means वहाँ पे बिजली का connection नहीं था. Okay, so उसने क्या किया? अपने match box निकाला, उसमें से एक kerosene lamp को lighten किया और table पे रख दिया. Okay, there was no light on the doctor's room. Okay, I had just set up medical practice and my earning were meager. Meager means होता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में होना या बहुत कम होना, less amount में. Okay, I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which was then wearing. Okay, he said that he just starting his medical practices and he was earning very less. Okay, उसकी earning बहुत कम है and that is why he was living in such a shabby and dirty conditions. Okay, he just told the writer that he has just 60 rupees in his bag, and afterwards he added that he had also some shirts and dhotis to wear and a black color coat which he was wearing at the time of incident. Okay, so I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hang them up. Okay, उसने अपने रिमूव किया कोट को, शर्ट को, वेस्ट को, और जो वेस्ट था, वेस्ट मींस जो कॉलर आता है. ठीक है, तो वो कॉलर जो कि व्हाइट होना चाहिए था लेकिन वो इतना व्हाइट नहीं था. इट मींस व्हाट? इट वाज इन अ डर्टी. ओके, आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम. इट वाज एन आउटर रूम with one wall facing the open yard. It had a tilt roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was a ceiling. There was a regular traffic of rats to and fro from the बीम. ओके, यार्ड मतलब होता है एक ओपन एरिया होना, जैसे गार्डन या वरांडा जिसको बोलते हैं. ठीक है, ऐसा एरिया होना. और वहां पे तो जब उसने अपने विंडोज को ओपन किया, ओके, ओपन करते ही द रूम which he had taken on the rent was outside the house. Okay, घर के बाहर की तरफ था and one wall of the room faced the garden and the roof had tiles on it and the gable was supported by the beams inside the room. There was no roof. The beam or
on which the gamble was supported was full of rat which were in and out in the room through it. Okay, ठीक है, उसके ऊपर कोई रूफ नहीं था. एक गैम्बल, गैम्बल मीन्स होता है एक हट शेप में जो बना हुआ रहता है ना, ट्रायंगुलर शेप में बाहर की तरफ, तो ऐसा था उसका स्ट्रक्चर. ओके, तो वहां पे भी क्या था, हमेशा रैट्स इधर से उधर भागते रहते थे. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. Okay, taken time off का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि उसने छुट्टी ले रखी हो. ठीक है, विंड ने जैसे छुट्टी ले रखी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसे नींद नहीं आ पा रही थी गर्मी के कारण, तो वो वरांडा में गया कि शायद उसे कोई एयर मिल जाए, बट ऐसा नहीं था. उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि छुट्टी मनाने गई है, एयर भी नहीं, कोई विंड नहीं चल रही थी वहां पे. I went back into the room and sat down the chair. I opened the book beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. Okay, he came back. Okay, he came back to his room and sat on the chair. And उसने क्या किया, अपना बॉक्स निकाला और जो टेबल के नीचे था उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम है मैट्रिया मेडिका. ओके, ठीक है, और मेडिकल से रिलेटेड एक बुक होती है ये, तो वो उन्होंने बुक निकाली. एंड उसके बाद में सेम टेबल पे जहाँ पे लैंप और मिरर था और उसके पास में एक छोटी सी कंघी थी, तो वहां पे वो बैठ गया. ठीक है, one feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. Okay, as he was sitting in front of the mirror, okay, he was sitting in front of the mirror, he looked at the image in the mirror. Okay, he is just staring himself in the mirror. He says that he was a great admirer of beauty. वो तो एक ब्यूटी की बहुत बड़ा मतलब जिसको एडमायर किया जाए ऐसा इंसान है. as he was a young man, वो एक यंग मैन है और उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अपनी ब्यूटी को और निखारना चाहिए. and wanted to improve him looks like more handsome. Okay, I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence filled. वो उसे लग रहा है कि मैं एक अनमैरिड हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, ठीक है, एक एलिजिबल बैचलर भी हूँ. ओके, सो ही वांटेड टू मेक पीपल नो दैट ही वाज आल्सो अवेलेबल. ओके, उसे भी अपने प्रेजेंस को शो करना है. ओके, आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माय हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट. ओके, उसने जस्ट कॉम उठाया और अपने मतलब पार्टीशन करके अपने कंघी करना शुरू कर दिया. ठीक है, कॉम करना शुरू कर दिया प्रॉपर वे में, ताकि वो बता सके कि भाई हाँ, मैं भी एक नीट एंड क्लीन और बहुत ही हैंडसम चार्मिंग यंग मैन हूँ. ओके, अगेन आई हियर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. उस टाइम पे उसे दोबारा से वो आवाज सुनाई दी, लेकिन this time also he ignored that noise because he was very familiar about this noise. Okay, I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. Okay, he looked carefully in the mirror and decided that he would shave daily. Okay, daily वो शेविंग करेगा. ठीक है, थोड़ी थोड़ी थिन मुस्टैच रखेगा वो, ताकि उसको और ज्यादा बेटर और ज्यादा हैंडसम वो लग सके. I was after all a bachelor and a doctor. मैं एक अनमैरिड हूँ, डॉक्टर भी हूँ. Okay, and he wanted to say that he was supposed to look very handsome. He was supposed to be good looking so that he could get a better match for himself. Okay, I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. Okay, उसने अपने आप को appreciate किया. Appreciate करने के बाद जब वो हंस रहा था तो उसने notice किया कि उसकी smile बहुत attractive है. Okay, and उसने उस time पे ही एक earth-shaking, धरती हिला देने वाला एक और decision उसने लिया. And that was what he smiled and that उनसे बोला कि अब से मैं हमेशा क्या करूँगा, अपने face पे एक छोटी सी प्यारी सी अट्रैक्टिव सी स्माइल हमेशा रखूंगा. दैट वाज अ गुड. ओके, I was after all a bachelor and a doctor too. On top of it again came that noise from above. वो बोल रहा था अपने आप से कि मैं एक बैचलर हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ ऊपर से. तो वो जब ये बोल रहा था उसी टाइम पे अचानक से एक नॉइज आई. ठीक है, again he is stressing that he was a bachelor. Again he was stressing on add on that I am a doctor and like that. Okay, I got up, faced up and down the room. Another lovely thought struck me. I would marry. I
would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be a fat for a valid reason. Okay, and what is the reason behind it? Okay, if I made some silly mistakes and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. Okay, अब उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया. अब उसने बोला, he got up from his chair and started walking up and down in the room. Okay, and then he decided no more things. He decided to marry a woman doctor. Okay, वो woman doctor से शादी करेगा जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, ठीक है, जिसने बहुत सारी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस कर रखी होगी. And the doctor thought he would be married with a fat girl. Okay, एक मोटी लड़की होनी चाहिए जिससे वो शादी करेगा. और उसका भी एक लॉजिकल रीजन था. लॉजिकल रीजन क्या था? That if he made some mistake, then his wife chased him in anger to hit him. Okay, अगर वो mistake करेगा तो उसकी वाइफ उसे मारने के लिए आएगी, और जब वो मारने के लिए आएगी तो वो उससे ज्यादा तेज भाग पाएगा क्योंकि वो तो मोटी है, फैटी है, तो वो तो उसके पीछे भाग नहीं पाएगी, उसको पकड़ नहीं पाएगी. So he will decided that he would marry within a fat, good practiced, have a lots of money, a woman doctor. Okay, then with such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sound from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube has fallen on the ground. Surely nothing to worry about. Okay, अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा था वो. अगेन वो चेयर के सामने बैठ गया और उसी टाइम पे क्या हुआ, बाकी तो साउंड आना जो पहले आ रही थी वो अचानक से बंद हो जाती है. ऐसी आवाज आती है जैसे कुछ गिरा है, थर्ड करके, मतलब नीचे कुछ गिरा है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रबर की ट्यूब गिरी है या फिर कुछ ऐसा. ठीक है, लेकिन इस टाइम पे भी डॉक्टर को ये सारी चीजें बॉदर नहीं कर रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत सारे सपने देख रहा है अभी. ठीक है, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड द टेक अ लुक. मैंने सोचा भी कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देखता हूँ. बट no sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake landing on me and my turning were simultaneously. Okay, simultaneously मतलब होता है जिस टाइम आप कोई कर रहे हो, मतलब सेम टाइम पे कुछ होना. ठीक है, दो चीजें एक सेम टाइम पे होना. तो जैसे वो मुड़ते ही उसके सांप जो था वो उसके शोल्डर पे आके बैठ गया. ओके, तो डॉक्टर टर्न, जैसे उसने डॉक्टर ने टर्न किया, he saw a big fat snake had crawled over the chair and sat on his shoulders, and the timing of the doctor turning around and the snake landing on his shoulder was same. I did jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do such things. Okay, वो जंप नहीं कर सकता, वो चिल्ला नहीं सकता, वो ट्रम्बल नहीं हो सकता, मतलब शिवर भी, मतलब पूरा शिवर हो रहा था वो क्योंकि उसको डर लग रहा था. ठीक है, इस टाइम पे वो ये सारी चीजें कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसको उतना टाइम ही नहीं मिला था. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Slithers का मतलब होता है ट्विस्टेड करना, ट्विस्ट करना, उसको और ज्यादा मोड़े जाना. ठीक है, द स्नेक मूव्ड हो रहा है उस टाइम पे, उसको रैप कर रहा है डॉक्टर को लेफ्ट आर्म में, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसका खून बहना ही बंद हो गया है. ठीक है, द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माय फेस. ओके, उसका जो हुड मतलब होता है उसका जो फेस का मुंह जो होता है. ठीक है, मुंह को यहाँ पे बोला गया है क्या बोला गया है यहाँ पे, हुड. ओके, तो इट वुड बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ. उस टाइम पे मैंने अपनी सांस को रोक रखा था. ठीक है, ऐसा हो रहा था मैं जैसे कि मैं कोई पत्थर हूँ, कोई स्टोन हूँ. ठीक है, मेरे माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव था लेकिन मेरा जो ये हाथ पैर थे मुझे ऐसा लग रहा था मैं पत्थर बन चुका हूँ. ठीक है, ओके, the door opened into darkness. In the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh. Okay, so there was a darkness all around. Okay, there's his room is not electrified at that time. Outside the room, inside the room, it was all very dark. Okay, there was only single light and the light of lamp in that room, and he was sitting like a statue. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. And उसी टाइम पे उस ट्रबल में उसको ये ऐसा फील हो रहा था कि भगवान भी यहाँ पे है. He was not able to do anything, so he started thinking of God. वो कुछ और कर तो सकता नहीं था, तो उसने क्या किया, भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हे भगवान प्लीज मुझे एक बार बचा लो.
Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letter outside my little hurt the word oh God. Okay, then उस टाइम पे उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ बोल नहीं सकता, तो भगवान को सुनाई कैसे देगा, काश मैं अपने दिल पे लिख सकता, तो उसने हर्टली अपने वर्ड से ऐसे ही बोला oh God. Okay, then there was some pain in my left arm में थोड़ा पेन होने लगा. It was if a thick leaden rod on a rod made of molten fire was slowly put powerfully crushing my arms. Arms was beginning to be drained of all strength. Okay, what could I do? As the snake has called itself, okay, और उसको wrapped कर लिया उसके आर्म पे, तो उसको वो experience हो रहा है वो pain, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा wrap कर रखा है उसको बहुत tightly, and he was feeling if a thick molten rod made of lead was crushing his arm and breaking it, and he felt helpless. He could not do anything to save himself. Okay, at my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. उसको ये लग रहा है मेरा छोटे से छोटा movement भी क्या करेगा कि स्नेक मेरे को खा सकता है, बाइट कर सकता है. सो इसीलिए उसने क्या किया, उसने वो सोच रहा है कि मेरी डेथ जो है, मेरी जो मृत्यु है वो मेरे से सिर्फ 4 इंच दूर है. ओके, he knew that if he moved a bit the snake would attack him. Okay, so suppose it is stuck. Okay, suppose it is struck. Which was the medicine I had to take? There were no medicine in the room. I was but a poor, foolish and a stupid doctor. I forget my danger and smiled feebly at myself. उस टाइम पे मैंने सोचा अगर ये मेरे पे अटैक भी कर देता है तो कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए, मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा पुअर, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ, बहुत ही ज्यादा स्टूपिड डॉक्टर हूँ. और मतलब ये सोच के मैं अपने डेंजर को भूल गया, और डेंजर भूलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप पे स्माइल पास कर रहा हूँ, अपने आप पे हंस रहा हूँ. इट सीम एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. उस टाइम पे लगा कि गॉड ने उसको अप्रिशिएट किया इस चीज के लिए, रियलाइज हुआ है उसको ये मिस्टेक, और उसने क्या किया, फेवरेबली क्या होता है कि डॉक्टर की लाइफ बच जाती है. कैसे बच जाती है? द स्नेक मूव्ड हिज हेड टू द अदर साइड. स्नेक ने अपना मुंह क्या किया, दूसरी साइड मोड़ा, और जैसे उसने मोड़ा तो उसको मिरर में उसका अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था. एंड it looked at the mirror and it was shows its own reflection on it. Okay, I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Okay, so it's not possible that any snake had never looked at itself in the mirror before. But yes, the snake was looking at itself in the mirror, and the doctor was surprised because the snake was looking at itself in the mirror very carefully. Was it admiring its own beauty? क्या ये भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है जैसे कि मैं कर रहा था? Okay, was it trying to making an important decision about a growing a milkshake, using eyeshadows, mascaras, wearing a vermilion spot on its forehead? तो उसको बस यही लग रहा है कि क्या ये भी स्नेक पे यही सारे डिसीजंस ले रहा है जो मैं ले रहा था, क्या ये अपने ब्यूटी को और एडमायर कर रहा है? ठीक है, कि उसको और आई शेडो लगाना चाहिए, मस्कारा लगाना चाहिए, उसको मास्टिक रखनी चाहिए उसको, ठीक है, इस तरीके से. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. व्हाट सेक्स वाज द स्नेक? वाज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो, for the snake unwound itself from my arm, slowly slithered into my lap. From there it grabbed onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. Okay, closer quarter means होता है और भी ज्यादा उसके साथ close जाना, मतलब mirror के पास close जा रहा है. So here doctor said that he did not know whether it's a male or it's a female snake, but he says that he will never come to know this because just then, because it crawled from his arm. वो उसके आर्म से धीरे धीरे उसके आर्म्स जो है वो ढीले पड़ रहे हैं. इट मीन्स क्या, वो क्रॉल करके जा रहा है, वो लैप पे चला गया, टेबल की जो लैप थी, ठीक है, वो जंप करते हैं एंड स्टार्टेड क्रॉलिंग इनटू द टेबल, एंड इट क्रॉल्ड वेरी क्लोजली टू द मिरर एंड स्टार्टेड looking at itself. The doctor thought that maybe snake wanted to look itself and have a closer look at its appearance. Okay, then I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई स्टैचू नहीं हूँ. अब मुझे पता चल गया कि मैं एक आदमी हूँ. उसको होश आ जाता है एंड मतलब उसको रियलाइज हो जाता है. Still holding my breath, अभी भी मैंने अपनी सांस रोकी हुई है. I got up
from the chair. मैं chair से उठा. I quietly went out from the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. जितना हो सकता था उतना तेज मैं वहां से भागा. And phew, वो बाहर जाके जैसे सांस लेगा ना, उसे सांस लिया उसने. Each of us having a sign of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? क्या किसी ने उस टाइम पे मतलब एज ए रिलीफ की सांस उसने ली फ्यू करके. और उसी टाइम पे किसी ने मतलब जो राइटर और उसके ग्रुप्स बैठे थे उसमें से किसी ने पूछा, क्या डॉक्टर आज भी क्या आपकी वाइफ सच में बहुत ज्यादा फैट है? ठीक है, सभी लोग उनसे मजाक करने लगे. देन ही सेड, नो. द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज. भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है. माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब वो है, मतलब बहुत ज्यादा दौड़ भी सकती है. थिन है, स्प्रिंटर मतलब भगवान का गिफ्टेड है, बहुत तेज दौड़ सकती है, बहुत ही ज्यादा मतलब थिन है. ओके. Someone else asked, Doctor, when you run, did the snake follow you? क्या तुम गए थे तो क्या आपका snake ने follow किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. उन्होंने बोला कि मैं अपने तब तक भागा जब तक कि मेरा फ्रेंड का घर नहीं आता है. ठीक है, मैंने ऑयल मसाज किया, उसके बाद बाथ लिया, उसके बाद फ्रेश क्लोथ्स पहने. और मुझे नहीं पता कि वो स्नेक कहाँ गया, वो मेरे पीछे आया नहीं आया, मैंने उसको कुछ मुड़ के देखा ही नहीं. ओके. नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there, but we found we had a little to carry. Okay, उस टाइम पे हमने सबने क्या किया, 8:30 के टाइम पे मैं और मेरे दो फ्रेंड्स थे, हम लोग घर पे गए वहां पे सारे सामान को उठाने के लिए वहां से, लेकिन मेरे पास बहुत ही कम सामान था. Some thief had removed most of my things. The room has been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing, a final insult. What was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one. The fellow had sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Okay, rascal mischievous और बहुत cheeky persons को बोला गया है यहाँ पे. तो someone मतलब कुछ वो बोल रहे थे, बोलते बोलते बोल रहे हैं कि someone had stolen most of the thing in my room. Okay, behind one thing, only one thing, and that was very insulting for me, and that was my vest. मेरा जो कॉलर रह गया था वहाँ पे, सिर्फ उसी को छोड़ के गया है वो. और वो बेवकूफ कहीं का उसको धो के वॉश करके यूज भी तो कर सकता था, उसको क्यों नहीं लेके गया? ठीक है. डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर? किसी ने पूछा क्या तुमने दूसरे दिन वो स्नेक देखा था? द डॉक्टर लाफ्ड. आई नेवर सीन इट सिंस. इट वाज अ स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. ओके, वो एक स्नेक था जिसने अपनी ब्यूटी के साथ ही था वो. और मैंने कोई भी स्नेक उसके बाद में नहीं देखा. ओके, सो दैट्स ऑल इन योर चैप्टर. इट्स वेरी फनी और वेरी इंटरेस्टिंग एंड मजा आ गया पढ़ के. ओके, और इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विनीता शेखर. थैंक यू सो मच.